बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम ज़ुबैर अब्बासी है और मैं पिछली 2 दिहाइयों से तालीम, तदरीस, तहकीक और वकालत के शोबे से मुंसलिक हूँ। मैंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से लॉ में पीएचडी की है और मैं मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ के साथ एज अ रिसर्चर एफिलिएटेड हूँ। मैं कानूनदान और सलमान अहमद मन का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने हमारे साथ ये कोलैबोरेट किया कि हम आप तक लॉ की ये लेक्चर सीरीज़ लेके आ सकें। इस सीरीज़ का मकसद ये है कि हम लीगल नॉलेज को ईज़िली एक्सेसिबल बनाएं फॉर स्टूडेंट्स। द मेन ऑडियंस फॉर these lectures are law students, लेकिन general public or lawyers may also find these lectures useful because we shall refer to latest case law and developments in statutes. In lectures, they will be based on both Urdu and English, क्योंकि अंग्रेज़ी हमारे यहाँ लॉ की ज़ुबान है, तो हम अंग्रेज़ी और उर्दू दोनों को एट द सेम टाइम अपने लेक्चर्स में यूज़ करेंगे। हम अपनी सीरीज़ का आगाज़ कॉन्ट्रैक्ट लॉ से शुरू करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट लॉ सिविल लॉ में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, इस वजह से हमने अपनी सीरीज़ का आगाज़ इस सब्जेक्ट से शुरू किया। There are various books which are available on contract law in the market. Generally, Oxford University के प्रोफेसर एवन मैकेंड्रिक की book is used as a standard textbook. We also recommend Contract Law written by Timur Somro, although that book is written for business studies students, लेकिन law के students भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए हमने एक बुक लिखी है कॉन्ट्रैक्ट लॉ। I along with Ayman Akhtar and Usman Mumtaz have written this book. It contains latest case law and developments in statutory law. This book is available. You can order it by visiting our Facebook page or our website www.globalinstituteoflaw.com। तो चलिए हम अपने पहले लेक्चर का आगाज़ करते हैं। अपने लेक्चर का आगाज़ करने से पहले मैं अपने कोर्स के ऑब्जेक्टिव्स बयान करना चाहता हूँ। सो व्हाट वी वांट टू गेट आउट ऑफ दीज लेक्चर्स। आवर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज़ कि आप में ये एबिलिटी हो कि आप इवेलुएट और एनालाइज कर सकें जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लॉ। सिमिलरली आप कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड मुख्तलिफ जो कवानीन हैं उनकी तशरीह कर सकें। यू आर एबल टू इंटरप्रेट स्टैट्यूट्स एंड अंडरस्टैंड केस लॉ। आवर थर्ड ऑब्जेक्टिव इज़ दैट यू आर एबल टू टेक research on primary and secondary sources that include statutes, case law, legal commentaries, articles, and laws in other jurisdictions. Our fourth objective is that you have the ability that आप अपनी legal argument formulate कर सकें। और हमारा आखिरी और पांचवा ऑब्जेक्टिव ये है कि आप में ये सलाहियत पैदा हो सके कि आप कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट कर सकें और कॉन्ट्रैक्ट को वेट कर सकें। सो फार एज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कोर्स इज़ कंसर्न्ड, हमने अपने कोर्स को 4 हिस्सों में तकसीम किया है। पहले पार्ट में हम देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कैसे होता है, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सेकंड कि जब कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मुलेट हो गया तो वो ऑपरेट कैसे होता है, किन पार्टीज़ के ऊपर वो अप्लाई होता है, कॉन्ट्रैक्ट की जो मुख्तलिफ शिकें हैं उनको कोर्ट्स किस तरह से उनकी तशरीह करती हैं। तीसरा पार्ट ये है
कि कौन कौन से सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं जिसमें एक कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस कैन बी एक्सक्यूज्ड. यू कैन एक्सक्यूज योर सेल्फ फ्रॉम नॉट टू परफॉर्म कॉन्ट्रैक्ट. अगर उसमें मिस्टेक है, कॉन्ट्रैक्ट में कहीं पर ड्राफ्टिंग करते कोई गलती हो गई, या कॉन्ट्रैक्ट फ्रस्ट्रेट हो गया, या देयर इज अनड्यू इन्फ्लुएंस, then those are the excuses for non-performance of contract. And the fourth and final part is when a contract is regarded to have been discharged, performed, and in case there is a breach of contract, what kind of remedies are available to the parties. Here is detailed course outline. So each main part is then divided into subparts, and we will be covering all these parts in our series. So, what is law of contracts? Generally, law of contract is a body of rules relating to enforcement of agreements and the remedies in case there is breach of agreements. It is important to bear in mind that there are some specific types of contracts, such as marriage, employment, hire and purchase, consumer, contracts for sale of goods, or lease agreements. For these types of contracts, we have specific rules. But the focus of our lecture series would be the general principles of contract law, which apply across the board. But while we are exploring these principles, we must bear in mind that for specific types of contracts, कुछ मखसूस rules हो सकते हैं उन ख़ास तरह के contracts के लिए. मिसाल के तौर पर जो marriage का contract है, so under Islamic law, marriage is a contract. उसके मखसूस rules हैं, कुछ मखसूस प्रिंसिपल्स हैं जो कि मुख्तलिफ हैं एक सेल के कॉन्ट्रैक्ट से. बाज़-औक़ात क़यास किया जाता है मैरिज के कॉन्ट्रैक्ट को सेल के कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, बट बेयर इन माइंड दैट दीज आर डिस्टिंक्ट एंड एट डिफरेंट टाइम्स specific rules are applied to specific types of contracts. Therefore, if you look at the Contract Act 1872, first 75 sections deal with general principles, and then there are specific principles relating to bailment, agency और फिर पार्टनरशिप का एक अलग से कॉन्ट्रैक्ट है. अगरचे bailment, agency और partnership themselves are types of contracts, but they are specific types of contracts and they have specific rules. This distinction is really important to bear in mind. What is a contract? Generally, law में contract को define किया जाता है that it's an agreement that is binding in law. और जो contractual obligations होती हैं वो parties अपने ऊपर खुद ही impose करती हैं. For example, when you go and buy something, you take that obligation on your own. अगर force का element, undue influence का element उसमें शामिल हो जाए तो contract valid contract नहीं रहता. So contractual obligations parties themselves create. This is really important. So contract के through parties जो हैं वो अपने लिए rules बनाती हैं, अपने लिए obligations create करती हैं. Contract Act 1872 की section 2 और उसकी subsection H जो कि definition की section है, it defines contract as an agreement enforceable by law. So हमारा जो codified law है Contract Act 1872 वो डिस्टिंग्विश करता है एग्रीमेंट को और कॉन्ट्रैक्ट को. सारे के सारे एग्रीमेंट्स, सारे के सारे इकरारनामे कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते. कॉन्ट्रैक्ट या मुआहिदा
अगर हम उर्दू में उसको कहना चाहें, वो वाला ट्रांजैक्शन होता है जो कि इन्फोर्सबल होता है, जिसको आप कोर्ट में ले जाके इन्फोर्स करवा सकते हैं. सो वी विल सी दैट नॉट all type of agreements are enforceable in the court of law. Social domestic nature के जो contracts हैं, जो domestic nature के जो agreements हैं, उनको courts enforce नहीं करती. So this distinction between agreement and contract is important so far as our codified law is concerned, but generally हम अपने लेक्चर्स में भी एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट को एज इंटरचेंजेबल टर्मिनोलॉजीज के तौर पर यूज़ करेंगे. बट दिस इज़ इम्पॉर्टेंट टू बेयर इन माइंड दैट एन एग्रीमेंट विच इज़ इन्फोर्सबल बाय लॉ इज़ कॉन्ट्रैक्ट. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स. कुछ कंज्यूमर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, कुछ नॉन कंज्यूमर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, कुछ एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो कि वक्तन फ़वक्तन परफॉर्म होते हैं. फॉर इंस्टेंस रेंट का, अगर हमने ये घर रेंट पर लिया है, ये दुकान रेंट पर ली है, तो उसका जो यूसेज है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम होता है. उसके अगेंस्ट में जो सेल का कॉन्ट्रैक्ट है, इट्स जस्ट परफॉर्म्ड. आई वॉन्ट टू बाई दिस पेन, आई पे द प्राइस एंड दैट्स इट. सो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स. कुछ वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, कुछ जो हैं वो इनकर करते हैं. सेम एग्जांपल लाइक अगर आपने ऊबर या क्रीम ऑर्डर की है, तो जो सर्विस है वो आपको आपके पूरे के पूरे सफ़र के दौरान में ऑफ़र हो रही है. इसी तरह से फ्रेंचाइज एग्रीमेंट है, वो आपका टाइम पीरियड का कॉन्ट्रैक्ट है. लेकिन जो सेल के कॉन्ट्रैक्ट हैं वो एट द स्पॉट हो रहे होते हैं, वन ऑफ हो रहे होते हैं. इसी तरह से एक और डिस्टिंक्शन है बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट और यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट की. सो बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, टू पार्टीज दे नेगोशिएट एंड देन दे एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट में वन पार्टी मेक्स अ डिक्लेरेशन एंड देन अदर पार्टी परफॉर्म्स. दिस डिस्टिंक्शन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लॉ? अगर हम कॉन्ट्रैक्ट लॉ के रूल्स को, प्रिंसिपल्स को समझना चाहते हैं, तो हमें कहाँ से पता चलेगा कि वो रूल्स कहाँ पर हैं? पाकिस्तान में कॉलोनियल पीरियड की जो लॉ, कॉन्ट्रैक्ट लॉ वाज कोडिफाइड इन द फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. इट कंटिन्यूज. देयर हैव बीन some amendments, but primarily it's the Contract Act 1872. We have a judgment of Karachi High Court 1980, PLD 1986, Karachi 234, worldwide trading versus semi-electric trading, जिसमें के कोर्ट ने ये होल्ड किया कि Contract Act is not exhaustive. It contains general principles, but its provisions are not exhaustive. We also have other statutes which provide principles that have implications for contract law. For instance, the Specific Relief Act 1877, which provides the remedies in case of breach of contract. We have Negotiable Instrument Act 1881. We have Transfer of Property Act 1882, Sales of Goods Act 1930, and different consumer protection acts at provincial and central level. All these statutes contain some principles of contract law. इसी तरह से custom or usage of trade can also complement or supplement the rules of contract law. We are an Islamic Republic of Pakistan, तो शरिया लॉ के प्रिंसिपल भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे कॉन्ट्रैक्ट लॉ में. सुप्रीम कोर्ट शरीयत अपीलेट बेंच ने अपने केस में वफाकी पाकिस्तान वर्सेस अवामुन्नास 1988 SCMR 2041 में ये होल्ड किया था कि कॉमन लॉ का प्रिंसिपल ऑफ कैविएट एम्प्टर, जिसको कि मुश्तरी होशियार बाश, इज़ नॉट
in conformity with the injunctions of Islam as laid down in Quran and Sunnah. और जो relevant section थी Sale of Goods Act की, it was amended in light of this judgment. This judgment had also declared certain sections of contract law, specifically 17 and 19, which contained this principle of मुश्तरी होशियार बाश और caveat emptor, और legislature को instruct किया था कि वो इसको amend करे, लेकिन legislature ने sale of goods की section 16 को तो amend किया, लेकिन contract act की जो section 17 और 19 है उसको amend नहीं किया. इसी तरह से we have the enforcement of Sharia Act 1991, which requires that statutes must be interpreted in light of Islamic law. इसी तरह से common law and equity continue to play very important role as supplementary sources of our law, and with reference to contract law, the law of contract. Now there is also an international context to contract law. There are two types of international instruments that may play a role in contract law. One are soft laws, they are non-binding. For instance, the principles of European contract law, the common frame of reference, global commercial code in the form of UNIDROIT principles of international commercial contracts, and there are also certain standard contract terms. For instance, Incoterms by International Chamber of Commerce and FEDEC conditions of contract for works of civil engineers. There are also hard law which are binding. For instance, United Nations Convention on Contract for International Sale of Goods, known as Vienna Convention or CISG. 85 countries including US and China have ratified it, but UK, Pakistan and India have not ratified that convention. What are the functions of contract law? Why we need contract law? So contract law का एक important function ये है कि ये facilitate करता है transactions को. If you want to buy and sell, if you want to set up an enterprise, what contract law does is that it facilitates transactions. And while doing this, it also regulates certain transactions. Although we have freedom of contract, we can enter into whatever contract we want to, but certain areas are regulated. For instance, consumer protection regulations, जहाँ पर consumers क्योंकि weak हैं और जो corporations हैं they are powerful, therefore consumer regulations try to protect consumers. So here there is a regulatory function of contract law. और contract law का एक और function ये है कि it fills the gap. If parties have not envisaged certain circumstance or certain incident, then contract law के जो rules हैं वो एक default rules के तौर पर apply होते हैं. For instance, parties have not thought about it. What will happen if goods are delivered lately? If there is a delay in delivery of goods, आपने कोई चीज़ order की और आपने expect किया कि वो आपको certain time पर deliver होनी चाहिए थी, लेकिन उसमें delay आ गया. अब डिले की मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं. कोविड की वजह से आपने देखा कि कैसे डिलीवरी का पूरा मैकेनिज़्म जो है वो डिसरप्ट हुआ. सो कॉन्ट्रैक्ट लॉ हमें डिफ़ॉल्ट रूल्स देता है और इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट लॉ ट्रांजैक्शंस को फैसिलिटेट करता है. एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन कॉन्ट्रैक्ट लॉ का ये है कि ये ट्रांजैक्शंस कॉस्ट को रिड्यूस करता है बाय limiting the chances of litigation. जब भी litigation होती है, parties have to incur extra cost. So what contract law does is that it reduces transactions cost.
and by doing this it encourages people to enter into more transactions. यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कि हम कॉमन लॉ और सिविल लॉ कॉन्ट्रैक्ट रूल्स को थोड़ा सा अप्रिशिएट करें. सो कॉमन लॉ इज़ बेसिकली इंग्लिश लॉ. We have two legal families, common law and civil law. By civil law, we just mean continental European law. Common law में there is no duty of good faith. कोई general duty नहीं है कि आप जो भी contract को perform करेंगे तो आप good faith की basis पर उसको perform करेंगे. So there is no general duty under common law कि आप जब negotiate करें contract को, आप contract को परफॉर्म करें या अगर सर्कमस्टांसेस चेंज हो जाएं तो आप गुड फेथ की बेसिस पर रीनिगोशिएट करें और आप अपने राइट्स को जो है वो अब्यूज़ नहीं करें. जबकि सिविल लॉ में जो कंटिनेंटल यूरोपियन कंट्रीज़ में और इवन चाइना में जो लीगल सिस्टम है उसके तहत देयर इज़ अ जनरल डिफ़ॉल्ट ड्यूटी ऑफ गुड फेथ. सो अब कॉमन लॉ में अगर आप चाहते हैं कि गुड फेथ की ड्यूटी हो तो आप अपने कॉन्ट्रैक्ट में उसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं. लेकिन अगर आपने अपने कॉन्ट्रैक्ट में गुड फेथ की ड्यूटी को इनकॉर्पोरेट नहीं किया तो देन इट्स नॉट अवेलेबल टू यू जनरली. एक और डिफरेंस जो सिविल लॉ और कॉमन लॉ में है कि कॉमन लॉ ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड अप्लाई करता है. आपने और मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया, इररिस्पेक्टिव कि आपका और मेरा सब्जेक्टिव इंटेंशन क्या था, कोर्ट ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड अप्लाई करके उस कॉन्ट्रैक्ट को इंटरप्रेट करेगी. बिकॉज ऑफ दिस डिफरेंस जो लेंथ है कॉन्ट्रैक्ट्स की वो कॉमन लॉ और सिविल लॉ में डिफर करती है. सो कॉन्ट्रैक्ट जो ड्राफ्ट किए जाते हैं कॉमन लॉ के तहत दे आर रिलेटिवली डिटेल्ड बिकॉज दे आर नॉट मैनी default rules such as duty of good faith which are already available. So parties have to write them into their contract. And remember कि contract के through parties अपना law create करते हैं. So there are certain rules जिनसे आप contract out कर सकते हैं. But there are certain rules you cannot contract out of them. We will be exploring those rules in the course of our lectures. I want to mention various theories of contract. One theory explains contract as will of the parties. So there should not be any interference by the state. Whatever parties want to enter into contract, they should be able to do so. And contractual rules are power conferring rules. So parties negotiate and they agree whatever they agree. It just depends on their agreement. This is an important theory, but it does not explain certain legal rules relating to contract law such as consideration, illegality, frustration, duties and consumer protection laws. Another theory which is linked to will theory is the promissory theory. So the parties based on their promises create their contracts. Persons impose contractual obligations on themselves. But similar to the will theory, this theory does not explain certain legal rules, for instance, consumer contracts, where state has imposed regulations for the protection of weaker parties who are the consumers. There is a third theory that is called reliance theory, which regards contractual obligations as being imposed by the law in order to ensure that those who are endorsed or rely upon the promises may not become worse off. अगर आपने मेरे साथ कोई वादा किया और मैंने आपके वादे के ऊपर रिलाई किया तो नाउ क्यों आपको अपना वादा पूरा करना चाहिए? क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशन जनरेट हुई कि आप अपना वादा पूरा
करेंगे। फॉर इंस्टेंस, आपने मेरे साथ मुआहदा किया कि आप मुझे अपना घर बेचेंगे। नाउ मैंने पैसे इकट्ठे किए और मैं जब पैसे लेकर या चेक लेकर आपके पास आया, आपने कहा जी नहीं, मैंने तो आई हैव चेंज माई माइंड। सो हेयर बेस्ड ऑन योर प्रॉमिस आई रिलाइड ऑन, एंड वाई यू मस्ट फुलफिल योर कॉन्ट्रैक्ट? बिकॉज ऑफ माई रिलायंस। अगर लॉ आपके कॉन्ट्रैक्ट को, आपके अल्फाज को, आपके वादे को इन्फोर्स नहीं करता, तो मेरा जो रिलायंस है आपके वादे के ऊपर, उससे मुझे नुकसान होगा। सो वाई वी शुड इन्फोर्स कॉन्ट्रैक्ट्स, वाई कोर्ट शुड इन्फोर्स कॉन्ट्रैक्ट्स? बिकॉज पार्टीज रिलाई ऑन ईच अदर्स प्रोमिसेस, एक दूसरे के वादे के ऊपर, एक दूसरे के अल्फाज के ऊपर वो रिलाई करते हैं। इसी तरह से जो ट्रांसफ़र थ्योरी है कॉन्ट्रैक्ट की, वो हमें ये बताती है कि प्रोमिसेस के थ्रू पार्टीज़ जो हैं वो प्रॉपर्टी लाइक राइट्स क्रिएट करते हैं। आप मुझसे या किसी भी शॉप से ये बुक ख़रीदना चाहते हैं, आप उनको पैसे देते हैं और जो शॉपकीपर है वो आपको बुक देता है। सो नाउ दिस इज़ अ कंसिडरेशन। नाउ व्हाट हैपन्स इज़ दैट I have intellectual property in this book and you have the money. So our transaction is basically sale of or exchange of property. Same applies with respect to sale of a pen or a sale of property. So promises create property like rights even when they might not actually be property. If you are working इन एन ऑर्गेनाइजेशन, आपकी उनके साथ जो कमिटमेंट है, आपका उनके साथ जो मुआहिदा है, आपका उनके साथ जो एग्रीमेंट है कि आप सर्टेन नंबर ऑफ आवर्स काम करेंगे, एक पर्टिकुलर पोजीशन पर करेंगे, तो आपको तनख्वाह मिलेगी। सो आपकी तनख्वाह जो है वो आपका प्रॉपर्टी राइट है, और जो आपका एग्रीमेंट है ये एक्चुअली प्रॉपर्टी लाइक राइट्स क्रिएट कर रहा है। सो दिस इज़ कॉल्ड ट्रांसफ़र थ्योरी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लॉ और कॉन्ट्रैक्ट्स। यहाँ पर यह भी इम्पोर्टेंट है कि हम कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट और रेस्टिट्यूशन में फ़र्क करें। हमने पहले बयान किया कि जो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस हैं पार्टीज़ इम्पोज ऑन देमसेल्व्स, लेकिन जो टॉर्ट की रेमेडीज़ हैं वो लॉ इम्पोज करता है। फॉर इंस्टेंस, आई वॉज ड्राइविंग and unfortunately I hit someone and injured that person. Now whether or not I like it, I'll have to compensate that person if the accident was caused due to my negligence. That is tortious remedy. इसी तरह से जो restitutionary remedy है, for instance गलती से बैंक ने आपके अकाउंट में 5 million rupees ट्रांसफ़र कर दिए, you know that that money is not yours. And under the law you're liable to return that money. You should not treat that money as your money. So contractual obligations हम अपने ऊपर खुद ही impose करते हैं, लेकिन जो tort की रेमेडी है और जो restitution की रेमेडी है वो law हमारे ऊपर impose करता है। और contract, tort और restitutionary remedies, they are sometimes very closely linked. That's why it's important to make distinction between them. I'll repeat again that contractual remedies or contractual obligations we impose on ourselves, लेकिन जो tort और जो restitution की जो remedies हैं या जो obligations हैं वो law हमारे ऊपर impose करता है। अब कॉन्ट्रैक्ट लॉ को पढ़ने के मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव्स हो सकते हैं, मुख्तलिफ अप्रोचेज़ हो सकती हैं। कॉन्ट्रैक्ट लॉ का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 और उससे रिलेटेड लॉ पढ़ें, दैट इज़ कॉल्ड द ब्लैक लेटर लॉ, एंड जैसे नाउ आई नो व्हाट इज़ कॉन्ट्रैक्ट लॉ। देयर इज़ ऑल्सो सोशियोलॉजिकल अप्रोच, रियल वर्ल्ड अप्रोच। अब ज़रा जाके देखें कि जो मुआहिदात हो गए हैं उन पर अमल भी होता है कि नहीं, और अगर अमल नहीं होता तो फिर क्या होता है।
कोर्ट्स में अगर कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच के केसेस लेके जाए जाते हैं तो हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर द कोर्ट्स टू एडजुडिकेट दोज केसेस? Is it advisable for the parties to go to the court, or parties actually develop or come up with their own mechanisms to enforce their promises? That is the sociological study of contract law, and I would really encourage our students to think about from that perspective also, because not only we must have the black letter law, but we must also have the knowledge that how law is actually applied in our society and in our courts. So that's the sociological analysis of law, real world analysis of law. There is another approach that is called law and economics approach, or economic analysis of law. It's a very important approach when it comes to commercial or corporate laws. And it has been very popular among scholars, that you apply economic principles in order to analyze the laws. Whether laws are efficient, and what do we mean by efficient? Efficiency is gauged in terms of their economic efficiency. If the purpose of contract law is to facilitate transactions, by reducing transactions cost, to what extent a statute, that is the Contract Act 1872, that was drafted around 150 years ago, still continues to be the law of the land in Pakistan? Why is it that it has persisted for so long? And the approach that I would encourage you to adopt in this course is critical reflective approach. और इस अप्रोच के तहत हम मुख्तलिफ सवालात पूछते हैं. एक सवाल ये है कि why contract law is the way it is? 1872 का एक्ट क्यों अभी तक परसिस्ट कर रहा है? Not only in Pakistan but also in India and also in Bangladesh. How is it that no one has ever thought about changing it? And as we will look into our later lectures, that some of the rules which are incorporated or which are contained in Contract 1872 are really dated. So कैसे मुमकिन है कि वो वाली statute अभी तक continues to be the law of the land in Pakistan, and whether a particular rule can be justified? Look into the rule about consideration, या offer and acceptance, या duress, या frustration. Is it justified? And if it's not justified, why not? And how we can improve it? So not only that we will be looking into the law, but we will be evaluating the law. Why is it the way it is? Does it fulfill the functions or the objectives for which it has been formulated? Is there a need for it to exist and continue to exist? Can it be improved? And if it can be improved, how? So I want to leave you with this question: why Contract Act 1872, that was formulated about 150 years ago, continues to be law of the land in Pakistan? Is there a need to reform it? And if there is a need for reform, what kind of changes could be brought into that act? Should we reform it, or should we come up with an entirely new statute? With this thought, I thank you for listening to this session, and I look forward to interacting you in future. Thank you very much.